अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम जॉन वुल्फगैंग गोएटे के बारे में जानेंगे। ये पैदा हुए थे 1749 में और इनकी डेथ हुई थी 1832 में। ये जर्मन राइटर थे और स्टेट्समैन थे। इनकी जो वर्क है उसमें एपिक, लिरिक, पोइट्री, रिटन इन वैरायटी ऑफ मीटर एंड स्टाइल, प्रोज एंड वर्स, ड्रामा और मेमोर शामिल हैं। 1775 में इनका जो फर्स्ट नावल था द सॉरो ऑफ यंग विदर, एपिस्टोलरी एंड ऑटोबायोग्राफिकल, सामने आया। अर्ली पार्टिसिपेंट थे स्ट्रीम एंड ड्रैंग लिटरेरी मूवमेंट के। After returning from a tour of Italy in 1788, his first major scientific work, The Metamorphosis of Plants, जो था वो पब्लिश हुआ। Goethe published his second novel, Wilhelm Mr. Apprenticeship, The World's Epic, Hermann and Dorothea। ये 1808 में आया। एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ हिज मोस्ट सेलिब्रेटेड ड्रामा फॉस्ट भी सामने आया। R.W. एमर्सन ने गोएटे को सेलेक्ट किया है एज वन ऑफ 6 रिप्रेजेंटेटिव मैन इन हिज वर्क ऑफ द सेम नेम अलॉन्ग विद प्लेटो, नेपोलियन एंड शेक्सपियर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट गोएटे का जो वर्क है वो प्रोड्यूस हुआ था वेरमेर वर गोएट्स वन बिरलिचगन। ये ट्रेजेडी थी। दैट वाज द फर्स्ट वर्क टू ब्रिंग हिम रिकग्निशन इन द नावल द सॉरोज ऑफ यंग विदर, विच गेन्ड हिम enormous fame as a writer in the Sturm and Drang period, which marked the early phase of Romanticism. गोएटे फैसिनेटेड थे कालिदासा के अभी यंग शेटलम, which was one of the first work of Sanskrit literature that became known in Europe after being translated from English to German. Literary movement स्ट्रम एंड ड्रैंग का जिक्र करें तो इसका मतलब होता है स्टॉर्म एंड ड्राइव एंड स्टॉर्म एंड अर्ज। प्रोटो रोमांटिक मूवमेंट इन जर्मन लिटरेचर 1960 to 1980। वेमर क्लासिसिज्म एक जर्मन literary and cultural movement है whose practitioner established a new humanism from the synthesis of ideas from Romanticism and the age of Enlightenment. It continued for 33 years, 1772 to 1805. Important works का जिक्र करें गोएटे के तो वो है फॉस्ट, 1808 में ये नावल आया। It is a tragic play in 2 parts, usually known in English as Faust Part 1 and Faust Part 2. It is the play with the largest audience member on German language stages. Setting of Faust Part 1 is heaven, where Mephistopheles makes a bout with God that he can lower God's favorite human being. Earliest form of the work known as Faust. सॉरोज ऑफ यंग विदर एपिस्टोलरी लूजली ऑटोबायोग्राफिकल नावल है स्ट्रम एंड ड्रैंग पीरियड में। गोएटे was 24 years old when he finished Werther in 1774. Wilhelm Mr. Apprenticeship 1795 to 96, second novel translated into English by Themis Carl. Elective Affinities 1854 में ट्रांसलेटेड अंडर द टाइटल किंड्रेड बाय चॉइस। ये थर्ड नावल है इनका। प्रोमीथियस 1772 to 1774 poem in which mystic Prometheus addressed God as Zeus in Misothes accusation and defiance. Theory of Color German 1810, English 1840, a book about poets' view on the nature of color and how these perceived by humans. Italian Journey ये एक ऐसे है इनका। गोएटे रिपोर्ट्स ऑन हिज ट्रैवल टू इटली फ्रॉम 1788 to 1788 86 to 88. It is based on Goethe's diary. West Eastern Divan, a divan or a collection of lyrical poems by Goethe. It was inspired by the Persian poets Hafiz. तो ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन गोएटे का। इनकी डेथ हुई थी 1832 में।